Hello, beta. Good evening, everyone. So, beta, we will go ahead and we will begin with the revision of macroeconomics first. And macroeconomics mein, the topic that I want to pick up is going to be consumption and savings. ये एक बहुत important topic है जो हमारे entrance exam में definitely it will be asked in exam. Now, when we talk about consumption and saving, there are various theories, consumption theories, which can be asked in exam. आज हम दो important consumption theories से related MCQs को cover करेंगे. The first one is going to be life cycle hypothesis, and the second one is going to be permanent income hypothesis. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बेसिकली गोज अहेड और ये क्या बोलता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गोज अहेड एंड सेज दैट अ पर्सन विल गो अहेड एंड विल स्मूदन हिज कंजम्पशन ओवर हिज लाइफ टाइम. वो जितना भी पैसा कमा रहा है वो उसको स्मूदन करेगा. ही विल गो अहेड एंड ही विल कंज्यूम इट इवनली. स्मूदन माने ही विल कंज्यूम इट इवनली ओवर हिज लाइफ टाइम. तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं. सो लेट्स एज्यूम दैट अ पर्सन ही स्टार्ट्स अर्निंग एट द एज ऑफ 20. अब इन न्यूमेरिकल्स में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ पर्सन स्टार्टिंग टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, हम हमेशा उस एज से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग. वी आर नॉट कंसर्न्ड बिफोर 20. उससे पहले हम एज्यूम करते हैं दैट ही इज अ डिपेंडेंट. एंड हम हमेशा वो एज पिकअप करते हैं. वी ऑलवेज पिकअप दैट एज एट विच ही स्टार्ट्स वर्किंग, जहां पे उसका वर्किंग एज स्टार्ट होता है. लेट्स से दैट ही वर्क्स टिल ही इज 65 एंड ही डाइज एट द एज ऑफ 80. ठीक है. तो अब इस इंडिविजुअल का क्या एम है? व्हाट इज हिज एम? उसका एम ये है कि उसको 20 से लेके 80 तक, दैट मीन्स उसको जो भी मनी अर्न करना है उसको वो 60 इयर्स के लिए कंज्यूम करना है. ही वॉन्ट्स टू अफोर्ड हिज कंजम्पशन फॉर 60 इयर्स. Whatever money he has earned, earning of course is for only these many years. 65 minus 20, 45 years. So definitely we understand that he is only earning for 45 years. But उसको जो कंज्यूम करना होगा, the money that he will have to consume, that will be for 60 years. उसको अगले 60 years का प्लानिंग करना होगा. Let us go ahead and let us assume that suppose this person is going ahead and he is say earning कुछ भी एक random amount ले लेते हैं. So let's go ahead and say that this person is earning 30,000 per month और per annum कर लो. Suppose he is earning 30,000 per year. ठीक है. So he will be earning for these 45 years. बेटा 20 साल से शुरू किया और 65 तक जा रहा है. So he will be earning for 45 years. So what will be his total income? His total income will be 30,000. हर साल 30,000 earn कर रहा है into 45. This will be his total income. You can find this amount. It will come out as 135,000. ये उसका पैसा हो गया. This is what money he is going to go ahead and earn in these 45 years. अब ये जो पैसा उसने टोटल अर्न किया है ओवर 45 years, he has to do consumption for 60 years from that. उसको उसने 60 years निकालने हैं. So what will be his per year consumption? 135,000 divided by, he is living for 60 years बेटा, वो 60 साल के लिए जी रहा है. So divided by 60. When you will divide this by 60, क्या आ जाएगा आंसर? 22,500. That means हर साल, every year, he will be consuming 22,500. Even in the years when he is earning 30,000, जिस साल पे वो 30,000 भी कमा रहा है, हर साल वो 22,500 कंज्यूम करेगा और बाकी सेव करेगा. Right? So we can go ahead and we can say that his per year savings
कितना सेव कर लिया इसने? हर साल ही इज सेविंग 30,000, उसका इनकम है, माइनस 22,500, दिस इज हिज पर ईयर सेविंग, राइट? सो इफ यू गो अहेड एंड इफ यू फाइंड दिस अमाउंट, अगर आप ये वाला अमाउंट निकालोगे, यू विल गो अहेड एंड गेट 7,500। एंड कितने साल तक वो पैसा बचा सकता है? टिल द टाइम ही इज अर्निंग मनी। फिर उसके बाद वो उसी पैसे को यूज करेगा फॉर हिज कंजम्पशन। सो ही कैन सेव मनी ओनली फॉर दिस पीरियड व्हेन ही इज अर्निंग मनी। सो फॉर दीज 45 years, so what you will have, 7,500 into 45, this will be his total savings that he will be having। ठीक है, यू कैन गो हेड एंड यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट, इस अमाउंट को आप निकाल लेना, ये इसका टोटल सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस, दो तरीके के क्वेश्चन इसमें से वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन आस्क यू व्हाट इज his marginal propensity to consume, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कितना कंज्यूम करता है। तो अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज हिज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? तो हमें ये देखना होगा दैट ही वाज अर्निंग 30,000 and he was consuming 22,500. Sometimes they can also ask you what is his average propensity to consume. हर एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, right? So first of all, try to understand what is his marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume basically ये बताता है कि अगर हम उसकी इनकम को चेंज करते हैं तो what is his additional consumption? What is his extra consumption when you go ahead and when you change his income? That is marginal propensity to consume. That's the first kind of thing that can be asked. Another thing that they can go ahead and they can ask you is that what is his marginal propensity to save? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये बताता है दैट इफ माय इनकम चेंजेस, हाउ मच विल बी द चेंज इन माय सेविंग्स, मेरी सेविंग्स कैसे चेंज होगी। अब ये निकालने के लिए, टू फाइंड दीज वैल्यूज, हमें पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कंजम्पशन। हमने कंजम्पशन के लिए क्या किया? तो हमने कंजम्पशन निकालने के लिए, पर ईयर कंजम्पशन निकालने के लिए, पर ईयर इनकम को नंबर ऑफ ईयर्स वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड, इससे डिवाइड किया। सो अगर हम इसको जनरलाइज करें, देन व्हाट इज गोइंग टू कम आउट एज माय पर ईयर कंजम्पशन। बेटा कैसे निकाला हमने? पहले हमने 30,000 को 45 से मल्टीप्लाई किया, विच मीन्स मैंने पर ईयर इनकम को नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड, WL ले लेते हैं, वर्किंग लाइफ से मल्टीप्लाई किया, एंड आई डिवाइडेड इट बाय 60। तो 60 को सपोज आई कैन टेक नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड। तो दिस इज माय जनरल फॉर्मूला ऑफ कंजम्पशन, इसको हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ कंजम्पशन, वेयर YL is your income per year, where WL is your working years, and NL is your years lived। ठीक, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया। सो हमने बोला दैट C कंजम्पशन इज इक्वल टू YL इंटू WL बाय NL। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, माने हम दोनों साइड पे चेंज ले आएंगे। So change in consumption upon change in income can be written as WL by NL, working year by the number of years lived। माने अगर मुझे कोई भी इस क्वेश्चन में, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में, if someone asks me what is my marginal propensity to consume, तो what will I go ahead and what will I do? Working years, जो इस केस में 45 थे, और नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड जो 60 थे। रिमेंबर, आई विल ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम हियर, मुझे यहां से शुरू करना है। तो यहां से मेरे वर्किंग ईयर्स 45 एंड नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड 60। सो 45 डिवाइडेड बाय 60 जो होगा, दैट विल बी माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा?
1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो अगर यहाँ पे हमारा आंसर 3/4 0.75 आता है, सो इट विल बी 0.25। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। सो यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, किस केस में, इन केस ऑफ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू फाइंड आउट द टोटल सेविंग्स जो हमने यहां पे निकाला, फाइंड आउट द टोटल कंजम्पशन, फाइंड आउट द टोटल इनकम, पर ईयर कंजम्पशन। इसमें से कुछ भी, एनीथिंग दे कैन गो अहेड एंड दे कैन आस्क यू बेटा इन एग्जाम। ठीक है, ओके। सो नाउ based on this, let us take some numericals, some questions, and try to do some questions based on life cycle hypothesis. Try the first one. Who developed the life cycle hypothesis? Okay, good. All of you are correct, beta. The correct answer is Modigliani. This can come in the match the following also. तो हमें इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा that it was Modigliani who has developed the life cycle hypothesis. ठीक है, next question. The life cycle hypothesis suggests that individuals save only in their retirement year, consume based only on their current income, plan their consumption and saving over lifetime, do not consider future earning while making consumption decision. Absolutely, that is the correct answer. जब भी हम life cycle hypothesis का बात करते हैं, we always say that you consider both, you consider your consumption and saving over lifetime. जैसे हमने अभी example लिया, in which we considered it for the next 60 years, right? So it will be answer C कि हम पूरा lifetime का consumption या savings को देखकर then we go ahead and then we decide how much to consume. Okay, next question. According to the life cycle hypothesis, individuals tend to save constant proportion of their income, borrow when young, save during working year, save in retirement, avoid borrowings, save only for precautionary reason. Okay. So life cycle hypothesis में what is happening बेटा, they are going ahead and we are understanding. जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, so we go ahead and we see that basically when we are working we are saving money. यहाँ पे देखो, look back into this numerical that we have seen. So when we were working, every year that I was working I was saving 7,500. Now there is a diagram that you can see, it is in Dornbusch, जहां पे अगर if I start working at the age of 20, तो 45 after 45 years माने at the age of 65 I will have maximum savings. मेरे पास यहाँ पे maximum savings हो जाएंगी and those savings will be this amount, जो भी मेरा total savings आया होगा. And for the remaining years till 80 मैं उन्हीं savings को use करके by using this savings I will be consuming every year. ठीक है, so during my working years I will be saving, and here after my working age when I retire I will be using those savings for the purpose of consumption. मैं उन्हीं savings को use करूंगी for the purpose of consumption. So this is something which we are sure about, so answer will be B. अब क्वेश्चन ये आता है, why not A? Save a constant proportion of their income. This is not always true. In this case we have assumed कि income constant है, इसीलिए हम we were getting a constant proportion.
बट व्हाट इफ आई चेंज दिस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना होके ऐसा होता कि फॉर द फर्स्ट 5 years यू आर सेव, यू हैव इनकम ऑफ 30,000, अगले 5 year के लिए आपका इनकम 45,000 है, अगले 5 year के लिए इनकम 50,000 है, तो भी वी वुड हैव स्मूदन्ड आउट द कंजम्पशन, हम कंजम्पशन को इवन तो करते, बट इट वुड नॉट मीन दैट आई एम सेविंग कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम चेंज होती, जो मेरा सेविंग्स होता, इट वुड हैव चेंज्ड, right? So therefore the only thing that I can say in life cycle hypothesis is that when I am working I will save money, and when I am retiring I will dissave money. Dissaving does not mean borrowing. Dissaving means I am using the savings that I have, जो मैंने यहाँ पे money save किया है, whatever money I have saved here, I am just consuming out of these savings. So for first 45 years, every year I have saved this much money. Whatever money I have saved here, then from next year I will be using those savings. That is dissavings. It does not mean borrowing. So answer will be B. This borrow when young, this is just an additional assumption that for the first 20 years, because you are a dependent, आप borrow कर रहे हो पैसा. Borrowing can also mean just borrowing money from your parents. It does not always mean borrowing from the market. But it life cycle hypothesis का जो gist है, it says that you have to smoothen the consumption. Right? तो जिस साल में हम कमा रहे हैं, the year that I am earning, only those years I will save money, and बाकी time पे I will use my savings. I can borrow money, I can dissave, but I will save only during the working years. ठीक है. Come to the next question. Try this one. In life cycle hypothesis, primary determinant of individual consumption is current income, permanent income, lifetime wealth, government policies. That is correct, of course, क्योंकि life cycle hypothesis है. My consumption will depend on lifetime income. मैं throughout कितना कमा रही हूँ उस पर depend करेगा कि मैं हर साल कितना consume कर सकती हूँ. So it is going to be lifetime wealth, including current and future earnings. Okay, next question. Which of the following best explains this saving in retirement? We will include, yes. So if wealth is given to me, if I have taken some wealth from my parents, I will include that as my income in life cycle hypothesis. अगर मेरे पेरेंट्स ने सपोज मुझे 1 लाख दिए and I have to live for 60 years, then I will smoothen this also. मैं इसको भी distribute करूंगी. So yes. Okay, question number 5. Which of the following best explains dissaving in retirement? That is correct. That is correct. Individual no longer have income from wages and start spending their accumulated saving. तो वही जो diagram है, that you are increasing your saving every year. When you retire, you have maximum savings. Then you start using your savings. ठीक है? तो you don't have any wealth, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, and you are using your savings. That is the correct answer. ठीक है? 6th question. Life cycle hypothesis assumes that individuals are okay. That is the correct answer. हम ऐसा assume करते हैं कि individuals forward looking हैं. They know what their income is going to be in the future.